Now next one is the HTML list. List refers to record of group of information, जैसे list of names, list of places, list of items. Now HTML supports three types of lists. Second one is the ordered list. Third one is the nested list or miscellaneous list. First one is the unordered list. List of items with markers. Unordered list represented using a tag. Unordered list and goes with here. Every list start with list tag and end with list tag. Now for example, unordered list type circle, circular marker. Next one is the unordered list type disk marker. Now unordered list type square marker. Now unordered list को हम इस तीन प्रकार से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, सर्कुलर टाइप, डिस्क टाइप एंड स्क्वायर टाइप. Where in circular case it is a circular marker, in disk type it is disk marker, in square type it is a square marker. Now एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, उसके लिए हम नोटपैड में चलेंगे, न्यू फाइल ले लेंगे. नाउ अनऑर्डर्ड लिस्ट. नाउ स्टार्ट विथ द HTML टैग, HTML head tag. Now body tag, title tag, electronic product, close the title tag. Now close the head tag, busy color yellow, list Sony. Now copy it, Sony, Philips, Lenovo. Now close the unordered list. Now close the body tag. Now close the HTML tag. Save it as unordered list.html. Now open in the folder unordered list. Open, right click, open with Microsoft Edge. तरीके से हम देख सकते हैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो येलो है. ऑर्डर्ड लिस्ट की सर्कल के साथ डिस्प्ले होगी. अनऑर्डर्ड लिस्ट सर्कल टाइप से होगी लिस्ट. नाउ यहाँ पर जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके साथ हम एक हेड टैग दे देंगे, हेडिंग H2 हेडिंग के साथ इसको हम डिस्प्ले करवा देंगे. एंड क्लोज टू हेडिंग. नाउ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. नाउ बीजी कलर इज येलो एंड टेक्स्ट कलर को हम यहाँ पर ब्लू कर देंगे, इज ब्लू. नाउ सेव. नाउ ओपन इट, रिफ्रेश करेंगे. इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सोनी, फिलिप्स, सैमसंग, लेनोवो डिस्प्ले हो जाए. तो देखो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. कॉपी द कोड एंड पेस्ट हियर.